Hello everyone and welcome to this session where we will be decoding one of the most popular query of a CLAT aspirant, which is हमें कौन सा newspaper पढ़ना चाहिए? Should it be the Hindu or the Indian Express? The very first thing where I would like to stop you is that your question is incorrect. आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़पेपर बेटर है, आपका सवाल ये होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो कि क्लैट है, what does CLAT exam actually require from you through this newspaper reading? Newspaper is just a tool, एक जरिया है जिसके through you're going to build certain kind of skills that are required for you to ace this CLAT and AILET examination. Skills such as reading comprehension, which basically means reading quickly and also understanding whatever you are reading, despite the fact कि उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब आपको पता भी नहीं है. Skills such as argument analysis कि जब author एक चीज लिख रहा है तो उसका premise, conclusion, assumption क्या है. Skills such as issue awareness and the degree up to which you should be doing those issues such as BRICS Summit, Quad Summit, FIFA हो गया, European Union, India Free Trade Agreement, a new Prime Minister in Bangladesh, PM Modi's visit to Israel, so on and so forth. And finally, skills such as logical interpretation. तो जब भी हम अपना न्यूज़पेपर निकालते हैं हम क्या क्या चीज़ें करते हैं. हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हमें याद कुछ नहीं रहता. हम न्यूज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हम एनालिसिस करते ही नहीं. हमें लगता है न्यूज़पेपर से सिर्फ जीके करंट अफेयर्स होता है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज डिफरेंट न्यूज़पेपर्स आर बिल्डिंग डिफरेंट स्किल्स and you should know what kind of skills are important for you to ace your examination. Now let's take it up one by one. Let's start off with the Indian Express. Now before I talk about it further, both are really nice. In fact, for me, every newspaper is extremely okay because they are all reporting the same thing, which is the news. But chalo theek hai. Now Indian Express में इसकी लैंग्वेज जो होती है बहुत ईजी होती है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स रियली गो आफ्टर द इंडियन एक्सप्रेस बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर इज एक्सप्लेन सेक्शन एंड थोड़ा सा इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी तब मिल गई क्लैट एस्पिरेंट्स में जब क्लैट 2023 में सारे के सारे जो जीके के सवाल थे वो एक के बाद एक एक्सप्लेन सेक्शन से थे. वंस ओनली, डोंट गो स्टार्ट changing your subscription just yet, but that did happen once, right? They are best for beginners because obviously अभी अगर आपके पास रीडिंग की हैबिट ही नहीं है तो आपको थोड़ा इजी न्यूज़पेपर चाहिए जहाँ पे थोड़े इजी वर्ड्स यूज हो रहे हैं ताकि आपको फटाफट से समझ में आए. So people who are just not understanding the Hindu because of the sophisticated language that it uses, not that this is any less sophisticated, but it is easy to follow, right? Okay, so this is much better for beginners who are absolutely not okay with reading the newspaper, right? Outcome ये है कि बच्चे को बहुत easily पता चल जाता है कि क्या हो रहा है. So for example, if our Prime Minister has gone to Israel, they will come and tell us, in the explained section what it means, what is the Knesset, what was the speech all about. सब कुछ बड़ा simple शब्दों में explain किया जाता है. यही अगर हम लोग द हिंदू की बात करें तो इट इज़ अ लिटिल नेक्स्ट लेवल बिकॉज यहाँ पे इनकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी फॉर्मल होती है, थोड़ी एनालिटिकल होती है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है समझ में नहीं आई, लेकिन उस बच्चे ने जिसने कभी भी लाइफ में कुछ पढ़ा ही नहीं है अगर वो द हिंदू से शुरू करे तो शायद उसको डर लगेगा. वैसे डर लगना नहीं चाहिए बिकॉज वी डू द हिंदू एनालिसिस एट 7 AM every single day barring Sunday, which is a day for revision, on YouTube, which is free of cost for everyone. So you should definitely go and watch that. In fact, even in the Indian Express, we take up the most important topics, especially from the explain section, which are also given here free of cost on LPT YouTube channel. In opportunities का definitely आप use करिए. Now the Hindu is going to the strength area is policy के बारे में बहुत ही depth में वो बताते हैं और various different issues के बारे में बात होती है. The breadth that they cover, the kind of topics that they cover are great. Advanced comprehension है, थोड़ा argument tracking भी उसमें बच्चा learn कर सकता है through the editorials that are written, and there is a lot of help to build the skill of analytical thinking. Now this is for those students who are okay with reading. Now if you are already reading या फिर आपको इवन स्टोरी बुक्स रीड करने की आदत है तो कहीं ना कहीं आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होगी नहीं. और ये क्या करता है, एम्यूलेट करता है वो पैसेजेस जो क्लैट में आते हैं. सो हेंस एट द एंड ऑफ द डे अ स्टूडेंट हु इज रीडिंग दैट, फॉर हिम the CLAT passages become slightly easier.
So which is why also great for vocabulary building. So अगर हम लोग direct comparison कर ले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बीच में from our examination perspective, easy comprehension इंडियन एक्सप्रेस में है, इशू की क्लैरिटी दोनों के दोनों करते हैं, एडिटोरियल की डेप्थ थोड़ी ज़्यादा द हिंदू में है, वोकैबुलरी की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हिंदू में है, आर्ग्यूमेंट की एनालिसिस दोनों में होती है, यहाँ पे थोड़ी मॉडरेट होती है, यहाँ पे थोड़ी ऑन योर फेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एनालिसिस होती है, एंड क्लैट पैसेज का एक्सप्लोजर इज डिसेंट ओवर हियर बट इट्स एक्सीलेंट हियर. So the kind of level of passages that come, they sort of emulate whatever is there in the Hindu, hence that's a better one, right? So the Hindu is building clarity and the Indian Express is building clarity and Hindu is building your analytical maturity. Doesn't mean कि यहाँ पे clarity नहीं है, दोनों के आपके videos भी आते हैं, you can totally go and watch them and understand the editorials. The most important thing for you to understand is, and this is a question only you can understand and you can answer, is तुम कौन सी stage of preparation में हो. क्योंकि अगर हम बात करें स्टेज 1 की, जिस बच्चे ने कभी भी नहीं कुछ पढ़ा, उसको पढ़ने का कोई शौक ही नहीं है जिंदगी में, तो वो प्लीज इंडियन एक्सप्रेस से शुरू हो, बिकॉज देन यू विल गेट अ लिटिल कंफर्टेबल विद व्हाटएवर इज हैपनिंग, दे राइट इट इन एन ईजियर मैनर. And then slowly transition into a mix of both. In the sense, I'm not saying read the entire newspaper, not that you do any which way, but let's say you've started with the Indian Express, like a little further ahead, probably by April onwards, you should also start reading editorials of the Hindu. So if you're absolutely comfortable with the Indian Express, do that. But थोड़े करके या एक editorial पढ़ लिया या किसी दिन 2 editorial पढ़ लिए the Hindu के, तो transition करो, and finally you should at least read the editorials of the Hindu, right? Again, because it emulates the kind of passages that are there in CLAT. ठीक है? And now why many students struggle with the Hindu? Because you see, I'll tell you what, there's too much information. फिर उसमें filter system नहीं आता कि अरे यार ये CLAT के लिए क्या important है, कौन सी चीज़ important नहीं है. So for that you have your teachers, you don't have to worry about it, right? एंड थोड़ा जिनका स्लो रीडिंग स्पीड होता है उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है. जब हम लोग दिन में ज़्यादा समय न्यूज़पेपर ही पढ़ते रह जाते हैं तो हमें वैसे ही लगता है कि भाई कितना दिन खत्म हो गया और कुछ किया नहीं. सो इसीलिए दैट इज़ वाई यू हैव टू लुक एट विच स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू आर एट टू यूज द काइंड ऑफ न्यूज़पेपर टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ स्किल टू एस योर एग्जामिनेशन. And so now what effective newspaper analysis looks like, and this is something that we are already doing for you guys free of cost on YouTube, on the LPT channel, is we are filtering out the irrelevant news जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग कि इस न्यूज़ में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लीगल और पॉलिसी एंगल्स, ये सब कुछ हम कर रहे हैं. सो यू शुड watch it alongside, not because we are doing this, but only because it makes your life really easy. ठीक है? And helps you to build the skill to ace your exam. And you know, certain things that you can do on your own. कभी कभी होता है कि हम खुद ब खुद पढ़ाई कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ के ऊपर नहीं निर्भर होना चाहते, तो उन बच्चों के लिए you should be reading at least the front page, the editorials and opinion for sure, right? Ideas करके लिखा जाता है किन्हीं न्यूज़पेपर में. It's basically the same thing. National, international, Supreme Court judgments, not High Court, District Court and all of that. क्या नहीं पढ़ना is local city news, celebrity coverage, but if you're interested, I think you should never compromise on your interest. That's just me. Routine sports updates. So for example, the T20 World Cup is happening. Obviously, every day some or the other match is taking place. Somebody will win, someone will lose. You can't possibly learn all of them. End में जाके जो जीतेगा उसके बारे में पढ़ेंगे. That is it. So this is what you should focus on and what you should skip. And finally, जब भी आप किसी भी headline को देखते हो, तो आपने हेडलाइन देखनी है कि सबरीमाला टेम्पल की जो डिसीजन है उसमें रिव्यू हो रहा है बाय द सुप्रीम कोर्ट. यू हैव टू आइडेंटिफाई द इशू दैट दिस इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल एज फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट? Then you have to look at the kind of stakeholders that are involved. So basically in this news, the devotees of Lord Ayyappa, the Sabrimala temple, the deity over there, as well as the state, as well as the people of India, like the legal, the governance angle, whatever the Supreme Court is going to tell us, which obviously is going to be done by them, and we'll just read it from the newspaper and write it in our notes. And finally, इसके basis पे CLAT किस तरीके के सवाल लिख सकता है, बना सकता है. So you have to read that newspaper like an examiner. Like if you were setting the paper, would you consider this important or not? Or what kind of questions can you derive from it? The minute you start doing that, reading the newspaper becomes a cakewalk, right?
And final takeaway is, again, it depends totally upon the stage of your preparation, and both the newspapers, the important bits are being analyzed on a regular basis on the LPT YouTube channel, which you can look at. But if you're absolutely new to the preparation, I suggest, and you don't like reading or you haven't read a lot in your life till now, I suggest you start with the Indian Express because it helps you build your foundation. But somewhere down the line, you have to deepen it with the Hindu. If nothing else, please read the editorials. They're extremely important because they imitate the kind of passages that are there in your examination. And that is just it. The goal is to think like CLAT while reading the news and not just keep consuming more and more. Right? With that, I hope and pray that this particular doubt finally has been answered. Thank you very much.